Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study 91st Constitutional Amendment Act, which is a very important part of your preliminary examination in the Indian Polity series. Indian Polity series में आपका 91st Constitutional Amendment Act जो है वो काफी important है. इसको cover करना prelims के perspective से important है. So let's get started without any delay. The class PDF will be uploaded on our टेलीग्राम चैनल दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा. सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज इज द नेम ऑफ द चैनल. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो न्यूज में क्यों रहा है? This was in news because the opposition in Madhya Pradesh said that they will move the court as the strength of Council of Ministers in Madhya Pradesh exceeds the prescribed limit. हुआ क्या था न्यूज में? ये था कि मध्य प्रदेश के ऑपोजिशन ने ये कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश में है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लिमिट से ज्यादा है. Okay, that is why it was in news. Now let's start understanding the background behind the Constitutional Amendment Act of the 91st Constitutional Amendment Act of 2003. इसके पीछे का ना background थोड़ा सा समझ लेते हैं. All the major amendments you have to study them in detail. Okay. Before we start this lecture, here is a small announcement for all of you. Now this is the right time to subscribe because all the important offers presented by Unacademy Plus are going to end on 31st October. तो यहाँ पर Unacademy Plus ने जो भी इतने बढ़िया offers आपके लिए जो लेकर आए हैं वो सब 31st October को आपका end हो जाएंगे. तो उससे पहले you can take your subscription. We have one subscription to crack it all offer wherein you will get 25% discount plus 10% discount on your plus subscription if you take a 1 year 2 year plus subscription. 25% discount if you are taking a GS plus optional combo subscription. अगर आप combo subscription ले रहे हो GS plus optional का तो आपको 25% discount तो मिलेगा ही मिलेगा. 10% extra discount if you are using code ARPITA10. अगर आप ARPITA10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% का ये extra discount मिल ही जाएगा. Okay, so this is your 35% discount offer that Unacademy Plus is giving you, and again this will end till after 31st October. तो 31st October तक अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप इस ऑफर के पार्ट बन जाओगे. wherein under 57,704 rupees you get to prepare for pre, mains and optional for Unacademy from the platform of Unacademy Plus from top educators on Unacademy Plus. यानी कि pre, mains, optional सबकी तैयारी सिर्फ 57,000 में आपको करवाई जाएगी. उस पर भी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है. Then we have a 9 months combo offer to crack UPSC Prelims 2022. 9 months बचे हैं एग्जाम को. 2022 के एग्जाम को 8 से 9 महीने बचे हैं. अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर just is getting over. You have 8 months to go. So here Unacademy Plus will be giving you the courses for pre, mains, optional on Unacademy Plus under this 9 months combo offer wherein you will get 38% discount. 10% अगर आप अर्पिता कोड यूज करते हो, अर्पिता 10 कोड यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट तो आपका ही है. 28% अगर आप GS प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो. डेडिकेटेड 9 मंथ्स का बैच होगा जिसके अंदर प्री, मेंस, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी. ऑप्शनल कार्निवल यानी कि ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. 20 बुक्स आपके घर तक भिजवाई जाएंगी जिसके अंदर करंट अफेयर्स और PYQs भी होंगे सॉल्व्ड. 9 मंथ्स का आपको प्रीलिम्स का भी बैच मिलेगा. अगेन this offer is ending on 31st October. And if you are taking a 1 year or more subscription on Unacademy Plus, you will be getting test series for pre, mains and optional 45,000 की जो आपको free मिलेंगी. ठीक है? And as Diwali is coming, we are also giving you 3 months festive combo offer which is again going to last after 31st October. It will be ending. So make sure that you take your subscription before 31st October. कल से पहले अपना subscription ले लीजिए. The links are given below in the description box. And new batches are starting from 3rd of November. तो अगर आप Unacademy Plus पर जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप दिवाली से पहले Unacademy Plus के बैचेस का पार्ट हो जाओगे और अपनी तैयारी उतने ही जोर शोर से शुरू कर पाओगे. We are also bringing free test series for UPSC CSE जहां पर चुनौती डेली स्टैटिक क्विज 3.0 मंडे टू फ्राइडे 11:30 बजे सुबह मॉर्निंग में होगा. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM शाम को हुआ करेगा. ये फ्री टेस्ट सीरीज है. अगर आप फ्री ऑफर्स का पार्ट बनना चाहते हो Unacademy Plus पर तो आज ही एनरोल करो. Now, as I told you about the news, why it was in news. Now, second important point is that as per the rule, number of ministers in the state, this is important for prelims.
वैसे रूल के हिसाब से जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना स्टेट में, दे कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ असेंबली स्ट्रेंथ। टोटल जो असेंबली की स्ट्रेंथ है उसके 15% ही रहेंगे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल में। दिस इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उससे ज्यादा नहीं। Madhya Pradesh can have a maximum of 34 members, but here in the news, in MP's case, actual strength of Vidhan Sabha is presently only 206. टोटल स्ट्रेंथ जो है 230 है, एक्चुअल मेंबर्स जो है 206 है। दैट मींस नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे कैन नॉट बी मोर देन 30.9. Okay, but when there was a cabinet expansion in Madhya Pradesh, total strength of council of ministers including the chief minister became 34. It was way more than the actual strength. That means it is violating this 15% criteria. 30.9 होना चाहिए था, बट कैबिनेट का जब एक्सपेंशन हुआ तो सीएम को मिला के टोटल मेंबर्स हुए 34, यानी कि वो 15% का क्राइटेरिया क्या हो गया, ब्रीच हो गया. So constitution mentions lower limit of 12 ministers. Supreme Court had ruled in 2008 that there is no violation of law if council of minister has less members. मतलब if the strength is more, then that is violation. But if the council of minister strength is less, then that is no violation. Lower limit रह सकता है, but ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये point था. This was the ruling of Supreme Court in 2008. And then we had different amendments in the 91st Constitutional Amendment Act. Now the amendments were made, right? These were the following provisions that were made to limit the size of council of ministers so that exceed ना करे council of ministers का total strength. Okay, so first was that total number of ministers including prime minister and central council of minister, it will not exceed 15% of total strength of Lok Sabha. This is important. In prelims they can write over here Rajya Sabha. Okay, and then they will ask you which statement is correct. So correct answer is Lok Sabha. Lok Sabha का जो total strength है उससे 15% ज्यादा नहीं, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए central council of minister के number of ministers. And member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. तो member of either house, यहाँ पर सिर्फ एक house की बात नहीं हो रही है. In prelims they try to confuse you by writing Lok Sabha only. That will be wrong. It is either house of parliament and which belongs to any political party. And that minister, if he is disqualified on the ground of defection, then he will also be disqualified from becoming a minister. अगर defection की वजह से उस political party में उस minister को disqualify किया गया है तो उसको minister की position पे अगर appoint किया तो उस post के लिए भी उसे disqualified माना जाएगा. This is the second provision which has been added. Third is total number of ministers including, underline this. In prelims they can confuse you by writing excluding. That will be wrong. Including chief minister in council of ministers in a state shall not exceed 15% of total strength of legislative assembly. In case of prime minister, Lok Sabha. In case of chief minister, legislative assembly of that state. But number of minister including chief minister in state shall not be less than 12. This provision is not added in first point. Okay, this is regarding chief minister. State की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे. तो यहाँ पर है कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है 12 से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है, member of either house of state legislature belonging to any political party, these two terms are important, who is disqualified on ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister. ये same point है. Okay, in case of prime minister also, in case of chief minister also, this is the same point over here. All right. Now another important provision that was added was any office under central government or state government where salary or remuneration for such office is paid out of the public revenue of concerned government. तो यहाँ पर underline करो ये points. Any office अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जहां पर सैलरी जो है उस ऑफिस के पोस्ट की पोजीशन की वो पब्लिक रेवेन्यू से, उस गवर्नमेंट की पब्लिक रेवेन्यू से दी जा रही है. एनी ऑफिस अंडर अ बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अंडरलाइन, which is wholly or partially owned by central government, या तो partially own किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पूरी तरीके से ओन किया है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, and the salary or remuneration for such an office is paid by such a body except where such salary or remuneration paid is compensatory in nature.
उस पॉइंट को हटा के, जहां पर कंपलसरी है सैलरी देना, आर्टिकल 361 को हटा के, उस केस में हम उसे रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट मानते हैं। ठीक है, दीज आर दी डेफिनेशंस ऑफ रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। कोई भी ऐसा ऑफिस जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, जहां सैलरी पब्लिक रेवेन्यू से दिया जा रहा है। सेकेंडली, कोई भी ऐसा ऑफिस जो कि किसी बॉडी, किसी कंपनी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो इनकॉर्पोरेटेड, उसके अंडर आता है, जिसको पार्शियली या कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, और सैलरी जो है वो वही गवर्नमेंट या स्टेट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, एक्सेप्ट सैलरी ऑफ कॉम्पनसेटरी नेचर, उस पोस्ट को हम रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट बोलते हैं। और अगर किसी को डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी मिनिस्टर को हमने उस रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करने से हमने डिफेक्शन का केस लगाया किसी मिनिस्टर पे, तो वो मिनिस्टर इस तरीके के रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पे भी पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, इफ दैट मिनिस्टर इज डिस्क्वालिफाइड। दिस आल्सो यू हैव टू स्टडी। दिस इज अ पार्ट ऑफ द 10th शेड्यूल, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ पर 2018 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको पढ़ना है। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर इन एम लक्ष्मीकांत बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ दैट यू हैव टू स्टडी टुडे। ओके, डू नॉट miss that is your homework. So basically, if anybody asks you why 91st Constitutional Amendment Act of 2003 was introduced, it was introduced so that the number of ministers can be limited in a council of minister, which will save the huge expenditure incurred by states because of such huge cabinets. ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वील क्रिएट मोर सच लेक्चर्स ऑन मेजर अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।